Hello, my dear students. Jai Jagannath. Welcome to the session. So today we are going to study about classroom management. Unit 3 ଆମେ ପଢିବା role of teacher in school function. The first ଆମେ ଜାଣିବା teacher as a facilitator of learning. Okay. The first teacher is a pivot of any educational system. So ଶିକ୍ଷକ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ତମ୍ଭ educational system ର. The success or failure of the system depend on the teacher. ତ ଆମ education system success କରିବ କି failure ହବ ସେ କାହା ଉପରେ depend କରୁଛି ନା teacher ଙ୍କ ଉପରେ depend କରୁଛି. To make the educational system successful, teachers should be well educated, intellectually alive, and should have love towards their profession. So basically टीचर जदि एजुकेशनल सिस्टम को ग्रो अप करिया चाहूँ से केमिति हवा आवश्यक ना से जने इंटेलेक्चुअल पर्सन हवा दरकार वेल एजुकेटेड पर्सन हेते दरकार मोर एक्सपीरियंस पर्सन हेते दरकार ओके जा द्वारा कि से तंगा प्रोफेशन प्रति पैशनेट है कि वर्क करि परिबे ओके देन हम जानबा कोन द टीचर इज द डायनामिक फोर्स ऑफ द स्कूल टीचर को हमें गोटे डायनामिक फोर्स बोली कही था स्कूल लो काहे ना टीचर गोटे मल्टी डायमेंशनल पर्सन ताकर पर्सनालिटी बहुत डिफरेंट टाइप रे थाए से सब किछि काम को एक सहित से हैंडल करि पारंती ओके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हो स्कूल वर्क हो पीरियड हो पिला मन को क्लास अटेंड करबा हो जे कोनोसी जिंस हो माने स्कूल रिलेटेड सब किछि टीचर ठीक भाबरे ताको एडमायर करि पारिबे ओके देन a school without teacher is just like a body without soul a skeleton without flesh and blood the first हमें जानिबा तो जदि हमें स्कूल को कौन करिबे ना गोटे बॉडी भाबरे देखिबा ता सोल के ना टीचर ओके जेमिति स्केलेटन नो फ्लेक्स आउ ब्लड काढी नेले जेमिति केवल स्केलेटन रे हाड़ ही थाए बोन ही थाए तो सेमिति स्कूल रे जदि टीचर को काढी नबा तो केवल स्कूल को स्कूल ही कुआ जीवनी से गोटे घर भाबरे खाली देखा जीवो ओके देन हमें जानिबा टीचर आर बिल्डर ऑफ द नेशन तो टीचर को हमें कौन कहते हैं ना बिल्डर ऑफ नेशन दे कैन राइज द नेशन पिलर्स हाई बाय मॉडलिंग द फ्यूचर सिटीजन ऑफ द नेशन तो टीचर कौन करता ना नेशन को फ्यूचर आसेस्ट देता नेक्स्ट सिटीजन प्रदान करता रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कौन द अचीवमेंट एंड एस्पिरेशन ऑफ द नेशन लाई अपन ऑन द टीचर तो बेसिकली आम नेशन रो अचीवमेंट और एस्पिरेशन कहाँ ऊपर डिपेंड करछि ना टीचर को ऊपर the through work of the teacher many have defined the teacher in many way तो basically हमें टीचर को डिफरेंट वे रे हमें डिफाइन करि परिबा की कहथिले ना मनु कहथिले टीचर इमेज ऑफ द ब्रह्मा तो ब्रह्मा कोन करन ना पालन करन सेमिति टीचर कोन करन ना पिला मानु को पालन करन सेति पई टीचर को ब्रह्मा आख्या दिया जायछि ओके there are six characteristics which identify teacher as high facilitator okay there as follows कौन ना effective listening genuineness okay then asila understanding respectful knowledgeable skill in interpersonal communication okay first हमें जानिबा कौन ना response effective listening तो टीचर जो गोटे माने इफेक्टिव लिसनर हवा निहाती भाबरे आवश्यक काहे कि ना सब पिलांक सहित आई कांटेक्ट करिकि सब पिलांकर अटेंशन को निज आड़ को नेकी सब पिला को अटेंशन देकी ओके सब पिलांकर बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल एक्सप्रेशन वोकल टोन प्रोसेस एंड टाइमिंग ए सब को मैनेज करिया को पड़िबो देन सब पिलांकर फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करिकि सेमानक थॉट को बुझिकि पिला मानक सहित फैमिलियर हेकी ओके सेमानकर सब किछि जहाँ भी सेमानकर प्रॉब्लम रहइबो ताको लिसन करिया को पड़िबो ओके तांको वर्ड प्रति ध्यान देबा को पड़िबो जे पिला कोन कहबा चाहूची पिलार आइडिया को दिगो गति करूची ओके टीचर गोटे इफेक्टिव लिसनर हबा निहाती भाबरे आवश्यक देन टीचर जेन्युइननेस हवा दरकार काहे निज काम प्रति जदि पैशनेट रहिबे तो निहाती भाबरे सब किछि जिंस को मेंटेन करि परिबे देन आसिला अंडरस्टैंडिंगनेस बोथ टीचर एंड स्टूडेंट माने दी जन को बुझिबा निहाती भाबरे दरकार स्टूडेंट भी बिना किछि डर रे टीचर मानकु तांका प्रॉब्लम कहि परथि दरकार एवं टीचर स्टूडेंट कहिबा आगरु टीचर स्टूडेंट रो प्रॉब्लम को बुझी पारथि दरकार एमिति फैमिलियर हवा दरकार जेमिति दी जन परस्पर को रेस्पेक्ट दोथबे स्टूडेंट टीचर को रेस्पेक्ट दोथबे एवं टीचर स्टूडेंट रो डिग्निटी को ध्यान रखि कि ताको ट्रीट करूथिबे ओके देन रेस्पेक्टफुल ए टीचर शुड accept student experience as important to him so he should practice respect of other part of the classroom system and process teachers should be optimistic and have deep interest and concern तो बेसिकली टीचर कौन करिवे सब पिलांक प्रति डीप इंटरेस्ट रखिया दरकार ऑप्टिमिस्टिक हवा दरकार कि जादरा कि समस्त को समान भाबरे से कौन करिवे रेस्पेक्टफुली समस्त डिग्निटी को ध्यान रखि कौन करिवे समस्त को माने गोटे समान वे रे समस्त को से प्रदर्शन करेइबे देन हमें जानिबा knowledgeable also teachers should be knowledgeable because
ଯେତେ ଭାଷ୍ଟ ନଲେଜ ଟିଚର ରଖିବେ ସେତେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍କିଲଫୁଲ କରେଇ ପାରିବେ। ସବଜେକ୍ଟ ନଲେଜ ବି ଟିଚରଙ୍କର ରହିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କରେଇବେ ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ରତି ସେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର। ଓକେ, ଦେନ୍ skill in interpersonal communication. Communication skill, very simple and straightforward set of behavior. Young people can be taught to communicate using this behavior and are quite good at doing so. Teachers should have clear communication skill. Okay, टीचर ମାନଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ ସ୍କିଲ୍ ବି କଣ ନା ଗୁଡ ହେବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କି ପିଲାମାନେ ଠିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ କନସିଡର କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ରାଇଟ୍ ଦ ରୋଲ ଅଫ ଟିଚର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ପ୍ଲାନିଂ ଇଭେଣ୍ଟ କୋଅର୍ଡିନେସନ ୱିଥ ଅଥରିଟିଜ ଅଫ ସପୋର୍ଟ ଫର ସପୋର୍ଟ। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା step involving in planning. Planning ରେ କୋଉ ସବୁ step ଗୁଡା involve ହଉଛି। ଓକେ, planning is needed in every walk of life. Planning is important to perform and take successfully. Okay, ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ତାକୁ ମାନେ କରିବାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛିଟା ପ୍ଲାନିଂ ବନେଇଥାଉ, କିଛିଟା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବନେଇଥାଉ ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ଏଇ ଦିଗରେ ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରାଇବା ବା ଠିକ ଭାବରେ ତାକୁ ଅକ୍ୱାର କରାଇବା। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା कौन सब स्टेप रहुची टू आइडेंटिफाई द नीड ऑफ प्लानिंग। तो आमे जो प्लानिंग करबा को प्रकार सब नीड रहुची ताको फर्स्ट में आइडेंटिफाई करबा। देन प्रायोरिटी नीड, ता भीतर को नीड को हमें प्रायोरिटी देबा दरकार ताको आइडेंटिफाई करबा। देन एस्टैब्लिश गोल, तापर जे हमें हमर गोल सेटिंग करबा जे को जिंसटा को हमें फर्स्ट करिया को चाहूचे। देन डिफाइन द करंट स्टेटस, फर्स्ट हमें हम करंट स्टेटस देखिबा। ओके, देन to identify the barriers. Okay, then को जिनस सब माने बाधा बनुची ताको भी हमें आइडेंटिफाई करबा। ओके, देन हमें जानिबा to develop action plan. action plan कोन ना हमें जे सब हम बैरियर हमें देखिले जे ए सब जिनस हमर माने बैरियर आसिया को लागुची ताको हमें केमिति सेही वे रे ताको डेवलप करी कि नुवा प्लान हमें दे परिबा बा नुवा एक्शन हमें क्रिएट करबा। फर्स्ट हमें सेटा सेट करबा। देन टू मॉडिफाई द प्लान इफ द सिचुएशन और टास्क डिमांड्स। तो डिमांड हिसाब रे हमें हम प्लान को हम सिचुएशन हिसाब रे हमें हम टास्क को कोन करिना मॉडिफाई करबा टू इम्प्लीमेंट द एक्शन प्लान। देन हमें कोन करबा ना से जहां सब हमें एठी ए रु जी जाके जहां सब हमें करे ताको हमें इम्प्लीमेंट करबा। Then coordination with authorities for support teacher relation with colleges. Okay, in order to maintain cordial relationship, healthy climate, and good reputation of an institution, the relation between co-worker is very important factor. If the relation between the teacher are very poor, the people may also fall victim to the similarly the relation between the teacher are bound to influence the various interrelation in the school community. तो basically हमें कौन बुझली ना तो टीचर माने ताଙ୍କର को ऑपरेटर जो माने रहउचंदी को कॉलेजेस बा कॉलेज माने रहउचंदी सेमानक सहित कौन करिया दरकार ठीक भाबरे ठीक रिलेशनशिप रखिया दरकार गोटे कोऑर्डिनेशन समस्त भीतर रहया दरकार मेंटेन होवा दरकार काहे कि ना सेतिकर क्लाइमेट सेतिकर रेपुटेशन इंस्टीट्यूट रेपुटेशन सब किछि ठीक भाबरे माने रनिंग करिवो स्मूथली डेवलप करिवो। ओके, जा द्वारा कि को हम ना गोटे कम्युनिटी गोटे गोटे स्कूल गोटे माने ऑर्गेनाइजेशन ठीक भाबरे को हम ना प्रोफाउंड हबो। देन टीचर रिलेशन विथ द पेरेंट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो बेसिकली पेरेंट्स माने को सते टीचर रिलेशन केम दरकार ना जहां पे स्टूडेंट रा प्रॉब्लम थिबो से पेरेंट्स माने को जणेबे द प्रेजेंट circumstances the teacher has to extend the sphere of the relation to the parents of the children also. In the interest of child education, there is need for the teacher to have intimate knowledge of every people. Okay, तो पिलार जतक सब इंटिमेट नॉलेज रोचे से का ठार मिलिबो ना पेरेंट्स ठार मिलिबो। तो टीचर का ठार जानियो चेष्टा करियो ना पेरेंट्स ठार। तो टीचर मानकर पेरेंट्स को सहित भलो रिलेशनशिप रहइबा दरकार जहा द्वारा कि से माने पिला मानकर इंटरनल नॉलेज जा रहउछ बा इंटिमेट नॉलेज जा रहउछ ताको जानि परबे एवं पिलार साइकोलॉजी को स्टडी करी कि प्रॉब्लम को सॉल्व करि परिबे। मेकिंग अप डेफिशिएंसी इन लर्निंग, पिलार जहाँ भी डेफिशिएंसी थिबो लर्निंग रे ताकू सॉर्ट आउट करि परिबे। डिफिकल्ट ऑफ द स्टूडेंट आइडिंग इज होमवर्क रेगुलरली, पिला काहे कि होमवर्क करने ताकू भी माने सॉर्ट आउट करि परिबे। देन लेट अराइवल ऑफ फ्रीक्वेंट एब्सेंस ऑफ द स्टूडेंट फ्रॉम द स्कूल। ओके, पिला काहे कि डेली स्कूल को आछि ताकू भी सॉर्ट आउट करि हबो। देन डेफिशिएंसी इन हेल्थ, पिलार हेल्थ इशू रहले ताकू भी जानि हबो। मिड डे मील, ओके, ए सब जिंस हमें पेरेंट्स मानक से रिलेशनशिप रखिले ठीक भाबरे देन हमें ताकू फाइंड आउट करि परिबा। देन हमें जानिबा कौन ना procuring sanitary and books at the consequential rates. Okay, the arrangement of the convenience for coming and going, financial inquiry, sorry, inadequacy. The parents may also have their own problem with the child for which
which they may need the teacher cooperation. Okay, तो पिला को जो सब जिनस दरकार सैनिटरी जिनस जहाँ भी रोची बुक्स वगैरह सब किछि ठीक भाबरे अरेंजमेंट हेकी पिला को प्रोवाइड करियो निहाती भाबरे दरकार बोथ कहार माने माने बोथ जिम्मेदारी रहउची कहार ना टीचर एवं पेरेंट्स मानकर देन हमें जानिबा टीचर रिलेशन विथ पीपल्स कोन he most efficient cultivating and maintaining coordination with his peoples. Okay, तो बेसिकली ଯେମିତି ଗୋଟେ କୃଷକ କଣ କରିଥାଏ ନା ତା ଜମିରେ ହଳ କରିଥାଏ ଏବଂ ବୀଜ ପକେଇକି ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥାଏ ସେମିତି ଟିଚର କଣ କରିବେ ନା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ତାଙ୍କ ସାଇକୋଲୋଜିକୁ କଲ୍ଟିଭେଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ମେଣ୍ଟାଲକୁ କଲ୍ଟିଭେଟିଂ କରିକି ତାଙ୍କ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲକୁ କଲ୍ଟିଭେଟିଂ କରିକି ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟଡି କରି ତାଙ୍କୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିକି କଣ କରିବେ ନା ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୁଡ୍ ରିଲେସନସିପ बिल्डअप करिवे जहाँ भी मिस अंडरस्टैंडिंग रहइबो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ताकू सॉल्व करिवे ओके पिला मानक प्रति सिंपैथाइज रखिबे पिला मानक प्रति सेंसिटिव रहइबे इंडिविजुअली पिला मानक प्रॉब्लम को सॉल्व करिवे जेन्युइननेस रहइबे ओके पिला मानक प्रति इंटरेस्टेड रहइबे जादर कि कोन ना पिला मानक जहाँ भी प्रॉब्लम रहइबो सब किछि पिला मानक इंटरेस्ट पिला मानक एप्टीट्यूड ताका एबिलिटी ताका लाइक डिसलाइक सब प्रति टीचर माने ध्यान देबे ओके देन एक्सप्लेन अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ असेसमेंट ऑफ टीचर एंड फीडबैक मेकानिज्म ओके तो टीचर मानकर दायित्वबोध कौन रोची असेसमेंट प्रति पिला मानकर फीडबैक प्रति पिला मानकर मेकानिज्म प्रति ता विषय जानिबा देन कंसेंस डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन गिव द फॉलोइंग मीनिंग ऑफ द अकाउंटेबिलिटी educational accountability is a concept in which the school system and especially teacher are held responsible for the learning and academic progress of student okay तो एजुकेशन सिस्टम प्रति टीचर मानकर जो दायित्वबोध रोची ताको हमें accountability बोली कहिथाउ काहे कि टीचर accountability कोन means making the teacher responsible for the progress of the children they teach accountability is defined as responsibility to someone or for some activity okay तो पिला मानकर प्रोग्रेस रे जे सब एक्टिविटी जड़ित होकी रोची ताकू टीचर माने ठीक भाबरे जो डेवलप करके रेस्पोंसिबिलिटी नेथान ताकू हमें टीचर accountability बोली कहिथाउ ओके डायमेंशन ऑफ accountability कोन नाटी प्रोफेशनल accountability social accountability moral accountability okay administrative accountability ए सब दायित्वबोध टीचर मानकर प्रति रही थाए प्रोफेशनल इयर रे आउ सोशल इयर रे मोरल इयर रे एडमिनिस्ट्रेटिव इयर रे ओके फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी तो अकाउंटेबिलिटी डायमेंशन ए सब रहउची देन टीचर अकाउंटेबिलिटी कोन टीचर आर अकाउंटेबल टू पेरेंट्स स्टूडेंट्स स्कूल मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी एंड हाई अथॉरिटी देन criteria of accountability towards parents and communication कोन ना special care should taken towards poor and deprived section of people तो जो पीपल माने पोर रहउचंती जो माने टिके फाइनेंशियल ताकर कंडीशन ठीक रहउनी तांका प्रति स्पेशल केयर देबा निहाती भाबरे आवश्यक टीचर कुड एनकरेज देम टू बी एजुकेटेड से मानकू एनकरेज करेबे एजुकेटेड हवा लागि ही कुड ट्रीट चिल्ड्रन टू लिटरेट पेरेंट्स और पोर इक्वालिटी ओके तो लिटरेट पेरेंट्स जो मान रहउचंती एवं पोर पेरेंट्स जो मान रहउचंती तांकू से माने स्पेशली इक्वली से माने ट्रीट करिवे ओके ही शुड ट्रीट चिल्ड्रन टू लिटरेट सो जनरली देन ही शुड एक्टिवली पार्टिसिपेट इन एनरोलमेंट ड्राइव्स ओके तो पिला जेते अधिक पिला एनरोल करिवे ता देरे टीचर मानकर पार्टिसिपेट निहाती भाबरे गुरुत्वपूर्ण करूची जेहेतु टीचर माने पिलांकू इन्फ्लुएंस करिवे पिलांकू ठीक आ भूल रास्ता देखेबे ता देरे कि कोन ना पिला माने एजुकेशन प्रति आकृष्ट होइकी एनरोलमेंट रे ध्यान देबे ओके देन criteria of accountability towards school management kon teacher accountable to manage well in doing his duty he should develop mutual trust and respect so basically kon hoy na teacher mane kon karibe sorry टीचर अकाउंटेबल रहे का से मैनेजमेंट सहित एवं ताका ड्यूटी ठीक भाबरे से कंडक्ट करिवे ही शुड डेवलप म्यूचुअल ट्रस्ट एंड रेस्पेक्ट टीचर जड़े ट्रस्टेड एंड रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी डेवलप करिवे निहाती भाबरे दरकार देन criteria of accountability toward education department प्रति कौन ना follow the rule regulations sorry टीचर माने कौन करिवे ना rule regulation को follow करिवे continuously okay then he should be bound to follow the education acts program and policy और टीचर माने बाध्यतामूलक भाबरे education act को एवं policy को से माने कौन करिवे ठीक भाबरे conduct करेबे then method of assessing accountability कौन रहउची there are different type of feedback that is feedback based student then feedback by self feedback by college feedback by the parents feedback by management and feedback by educational authority in advanced school all the five types of offered feedback have been employed to get proper feedback okay so
बेसिकली सब पिलांकर सब मैनेजमेंट रो पेरेंट्स मानकर ओके कॉलेजेस मानकर समस्तकर फीडबैक निहाती भाबरे दरकार जेहेतु गोटे प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम हम गढ़िया को चाहूचे तो समस्तकर फीडबैक नहीं कि जहाँ भी बैरियर रहउची ताको सॉर्ट आउट करिकी डेवलपमेंट आडू आमे अग्रसर हबा निहाती भाबरे आवश्यक फीडबैक बाय स्टूडेंट कोन पिला मानकर जहाँ भी सब प्रॉब्लम रहउची ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप ऊपर ओके स्टडी ऊपर एजुकेशनल फैक्ट ऊपर लर्निंग ऊपर से सब ऊपर फीडबैक नबा निहाती भाबरे आवश्यक देन self assessment kono it most difficult from the feedback to undertaken it require considerable self discipline careful review and own work okay पिला मानकर self assessment निहाती भाबरे दरकार जा पर कोन ना पिला माने निजर मिस्टेक को सॉर्ट आउट करिकि निजको ग्लोरीफाई करिवे एवं कोन करिवे ना सब किछि जिंस रे से सर्टेन एक्शन नेबे एवं निजर सेल्फ असेसमेंट द्वारा से निजर वीकनेस निजर स्ट्रेंथ ऊपर माने व्यू पॉइंट को किछि देई परिबे ओके देन लाइन फीडबैक कोन ना line feedback most common from feedback is management and official of the educational department. Okay. It requires a cross between the two. This kind of feedback will give us various set of opinion about teacher by different people. Okay. Then we chaliba self assessment kono. Now in one of the best form of feedback to judge teachers perform related to the job unbiased however. Okay. So basically कोन ना फीडबैक हमें केमिति जज कर देकर सेल्फ असेसमेंट हिता आपरे ऑन बायसनेस से कि सब किछि जिंस को सेल्फ असेसमेंट हमें करबा निहाती भाबर दरकार देन इंस्टीट्यूट कैन यूज ए मिक्स ऑफ द अबव स्ट्रेटजी अकॉर्डिंग टू देयर नीड देयर डेवलपमेंट स्टेज एंड इंडिविजुअल ड्यूटी ऑफ टीचर देन हमें जानिबा डिस्क्राइब द कंडक्टशिप स्कूल एनवायरनमेंट कोन रहउची now effective teaching learning process will provide good environment headmaster teacher will play key role in the process okay headmaster and teacher should work as a team in order to develop transparency self esteem so basically आमे जदि से डिसिप्लिन को कंडक्ट करिया को चाहिबा एनवायरनमेंट को ठीक भाबरे रखिया को चाहिबा ता धरे वाइटल रोल के निबेबे ना हेडमास्टर एंड टीचर ओके से माने चाहिले पिला मानकर एनवायरनमेंट को से मानकर डिसिप्लिन को ठीक भाबरे मेंटेन करि परबे टीम वर्क कोन टीम वर्क विल इंप्रूव स्किल स्टूडेंट कलेक्टिव डिसीजन टेकन बाय टीचर एंड हेडमास्टर विल हेल्प स्टूडेंट इन ए ग्रेट वे ओके तो बेसिकली कोन ना टीम वर्क द्वारा पिला माने कोन करबे निजर स्किल को एनहांस करबे स्टूडेंट कलेक्टिव होबे ओके डिसीजन मेकिंग रे से माने रैशनल थिंकिंग पिलांकर बढ़िबो ता थर ताको हेल्प किए करी ना टीचर टीचर कोन करी ना ओटा फैसिलिटेटिंग रोल को निभेबे टीचर सेतिरे फैसिलिटेट करबे पिला मानकु जे कोटा भूल कोटा ठीक केउ मोरे गले से माने ठीक भाबरे माने तांको लर्निंग सिस्टम को कंडक्ट करि परिबे ओके देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीम वर्क करना कॉमन एम रिजल्ट ओरिएंटेड हेल्थ कंपटीशन honesty understanding between team member okay influence factor there are some factor which influence the functioning of a team ना कॉमन गोल ओके समस्तकर गोटे गोल हबा दरकार देन अदर टीम मेंबर स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट प्रति स्कोपनेस रहे दरकार मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल रहे दरकार ओके एसेंशियल फॉर मेकिंग एन इफेक्टिव टीम देन एनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू ऑल द मेंबर इन द टीम टू टेक द चैलेंज टू डू बेटर ओके तो समस्त को एनकरेजमेंट करिया द्वारा कौन हबो ना सब मेंबर मानकर कौन हबो ना एनकरेजमेंट बढ़िबो से माने चैलेंज को कौन करना गुड बेटर वे रे provide करिवे then suggestion may be invited from any member in the team or any person outside in the team also okay suggestion द्वारा कौन हबो ना प्रत्येक पर्सन आउटसाइडली टीम को एनहांस करिया को लागिवे then every member should have will to adapt and try out new idea तो सब लोकंकर माने कोन तांकर न्यू आइडिया को अडॉप्ट करिकि आमे से जो हमर गोल रहउछि ताको हमें ठीक भाबरे डेवलप करै परिबा देन रहला कोन ना द एजेंडा शुड बी रीड एंड डे बिफोर द मीटिंग जहाँ भी कुछ हमर एजेंडा रहउछि ताको ठीक भाबरे रीड करबा निहाती भाबरे आवश्यक ओके देन कोन आसिला now, one should listen the idea presented by all team member carefully. Okay, punctually in the starting in the meeting रे पंचुअल होबे दरकार. Okay, meeting रे ठीक टाइम रे पहुंचे दरकार. प्रत्येक मेंबर कर डिसीजन को केयरफुली लिसन करिया दरकार. समस्त को रेस्पेक्ट दे दरकार. Okay, समस्त को ओपिनियन रो डिफेक्ट्स करिकि प्रेजेंट करिया दरकार. समस्त को ओपिनियन को रेस्पेक्ट दे दरकार. Okay, समस्त को डिग्निटी हिसाब रे सब प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करिया को नेकी समस्त को जहां व्यू पॉइंट रहै छै ताको हमें ठीक भाବରେ consider କରିବା ଦରକାର then को ଆସିଲେ ना transparency then transparency in education is important for a variety of reason okay स्वच्छता होची गोटे एमितिका जिंस एजुकेशन सिस्टम रे निहाती भाବରେ ରହିବା ଦରକାର okay transparency the education is required at it help the parents university related organization to see what is happening in the classroom so basically transparency कोन ना
आमे क्लासरूम रे पिला केमिति स्टूडेंट माने केमिति टीचर को बिहेव करचंती टीचर माने केमिति स्टूडेंट माने को बिहेव करचंती ओके तो ये सब जिनस हेडमास्टर केमिति क्लास स्कूल को कंडक्ट करौचंती टीचर केमिति क्लासरूम मैनेजमेंट को ठीक भाबरे कंडक्ट करौचंती ओके जहाँ भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहउची जहाँ भी एजुकेशनल सिस्टम रहउची सब किछि स्टूडेंट माने टीचर माने पीपल्स माने आ पेरेंट्स माने सब किछि माने स्वच्छता भाबरे सब किछि जिनस परस्पर माने भितरे कଣ ना ठीक भाबरे बैलेंस ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ଓକେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି କ୍ଲିୟର ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଟିଚର ମାନେ ଏମିତି ଜିନିଷକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଟିଚର ମାନେ ଭଲ ପଢଉଛନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ପଢଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଜାଣିବେ ଯେ ଟିଚର ମାନଙ୍କର ମୋଟିଭ କଣ ରହୁଛି ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓକେ ଏବଂ ଟିଚର ମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ରହୁଛନ୍ତି ତ ସବୁ କିଛି ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ମାନେ ନିଶ୍ଚଳ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଭାବରେ ଯେ କିଏ କଣ କରୁଛି ସବୁ କିଛି ଜଣା ପଡିଯିବ ଓକେ then student learning outcomes assessment plan and procedure ସବୁ କିଛି transparent ରହିବା ଦରକାର okay evidence of student learning ପିଲାମାନେ କେମିତି learn କରୁଛନ୍ତି ତାର evidence ବି transparent ରହିବା ଦରକାର okay teacher can also give parents access information that help the better understand day to day operation of the classroom via learning management system and class then ଆମେ ଜାଣିବା କଣ ନା self esteem teachers should follow different strategy develop self esteem in student ତ टीचर कौन करेंगे ना डिफरेंट स्ट्रैटेजी को फॉलो अप करेंगे पिलामानकर सेल्फ एस्टीम करेइबारे टीचर शुड गिव होप टू स्टूडेंट अलाउ स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली टॉप स्टूडेंट फ्रॉम बंकिंग क्लासेस ओके तो टीचर पिलामाननको एनकरेज करी कौन करेंगे ना पिलामाननको होप देबे सेमाननको अलाउ करेंगे इंडिपेंडेंटली थिंकिंग पाई ओके रैशनल थिंकिंग पाई देन पिलामाननको गोटे अवेयरनेस करेइबे क्लास बंकिंग न करिया पाई ओके देन students should feel comfortness characteristics of people with low esteem okay ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜକୁ comfortness feel କରିବେ ତାଙ୍କ characteristics କୁ କଣ କରିବେ ନା build up କରିବେ then they are very sensitive about criticism they feel irritated without any reason okay they always feel worry about their past mistake then ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ past mistake କୁ ନେଇକି ଆମେ ବାର ବାର ସେଇ ଜିନିଷକୁ ମନେ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ ଟିଚର ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେନ୍ସିଟିଭଲି କେୟାର କରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସିଜମ ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କର always ସେମାନଙ୍କୁ encouragement କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ new way ଦେଖେଇବା ଦରକାର okay characteristics of people with healthy level of self esteem କଣ ନା they consider themselves equal in dignity ତ ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଡିଗ୍ନିଟି ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କନସିଡର କରିବା ଦରକାର ଦେନ୍ they also able to enjoy a great variety of activity they trust their capacity to solve problem okay ପିଲାମାନଙ୍କର trust କରିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ଯେ ସେମାନେ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କୁ ନିଜର କ୍ୟାପାସିଟି ହିସାବରେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବେ ଓକେ ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ 3 ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ